अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है और मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। आज का हमारा टॉपिक मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी किस तरह से उसका आगाज हुआ, उसके क्या अवामिल थे, क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसके अंदर वो थ्योरी का आगाज करना पड़ा, और कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस थ्योरी के ऊपर काम किया और किन सवालों की मदद से इस थ्योरी को बिल्ड किया। ये डेवलपमेंट स्टडीज की एक बहुत ही क्रिटिकल थ्योरी है जिसको हम डिपेंडेंसी थ्योरी कहते हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी इज पार्ट ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ ऑल द थ्योरीज जो हम डेवलपमेंट स्टडीज में पढ़ते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में मॉडर्नाइजेशन थ्योरी पढ़ी, आज हम डिपेंडेंसी थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। 1960 की दिहाई में उधर डेवलपमेंट स्टडीज के जो बहुत ज्यादा स्कॉलर्स थे वो ये सवाल पूछना शुरू हो गए कि क्यों है अब ऐसा, ही हमें क्यों सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है जिसके अंदर सारी मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहे। कुछ मुल्क हैं जो बहुत तरक्की कर रहे हैं और कुछ मुल्क हैं जो बहुत कम तरक्की कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ सवाल पूछना शुरू किए मुख्तलिफ किताबों में, जर्नल्स में, आर्टिकल्स में, और ये एकेडमिक डिबेट स्टार्ट हो गई दैट व्हाई आर सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड नॉट डेवलपिंग। इज इंटरनेशनल सिस्टम टू ब्लेम? Is there an international division of labor? And who is getting the benefit of global capitalist system? And how can states develop अगर इस situation में हमने develop करना भी है? इन सवालों को देखते हुए एक बहुत फेमस स्टडी हुई थी, राहुल प्रवेश ने की थी, who was working in the United Nations at that time. He found out that economic growth in the advanced industrial countries did not necessarily lead to the growth in the poorer countries. उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों की ट्रेड का, इम्पोर्ट का डेटा को इकट्ठा किया, उसको समझा, उसके ऊपर एनालिसिस रन किए, और वो इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे कि जो एडवांस कंट्रीज की ग्रोथ है उसकी वजह से गरीब ममालिक के अंदर ग्रोथ नहीं पैदा होती, और गरीब ममालिक भी उस तरह से तरक्की नहीं करते। ये वो रिपोर्ट बुनियाद बनी डिपेंडेंसी थ्योरी की। Because poor countries exported primary commodities to rich countries, who then manufactured products out of those commodities and sold them back to the poorer countries. ये जो वैल्यू एडिशन करते थे एडवांस कंट्रीज और जो अमीर ममालिक थे, by manufacturing a usable products always cost more than the primary goods and used to create those in products. इस तरह गरीब ममालिक ना सिर्फ अपनी प्राइमरी प्रोडक्ट्स अमीर ममालिक को दे रहे थे, बल्कि जब वो खरीदते थे वही फिनिश गुड्स और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स थे, उनकी उनकी जो कीमत थी वो कहीं ज्यादा होती थी जो कि प्राइमरी प्रोडक्ट से होती थी। तो इस तरह से गरीब ममालिक दे एंडेड अप पेइंग मोर कंपेयर टू व्हाट दे वर गेटिंग इन रिटर्न ऑफ द प्राइमरी गुड्स। अब अगर हम डिपेंडेंसी को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं दैट व्हाट इज डिपेंडेंसी। It is a situation in which the economy of a certain group of countries is conditioned by the development and expansion of another economy to which their own is subjected. अब मैं आपको क्लास ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ डियर व्यूअर्स, जिसके अंदर आप ये देख सकेंगे, आपको 3 लेयर्स नजर आ रही हैं सर्कल में। On the layers you would see three levels of the development. पहले आपको कोर नजर आ रहा होगा, then semi periphery, and then periphery. The authors of dependency theory, they have coined the term, these terms where they have categorized the nations into core, semi periphery and periphery. core में वो सारे अमीर ममालिक आते हैं जो कि पावरफुल नेशन है, यूरोपियन नेशन है, नॉर्थ अमेरिकन नेशंस है, and most of all the high income countries are included in the core group. पेरिफेरी के अंदर लो इनकम कंट्रीज, पुअरर कंट्रीज, लॉट्स ऑफ कंट्रीज इन अफ्रीका, जो भी गरीब ममालिक है उनको पेरिफेरी में डाला है। अब इनका सिस्टम कैसे चलता है अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी थ्योरी, जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आप एरोज देख रहे हैं, दैट इंडिकेट्स द फ्लो। अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी थ्योरी द अंडरस्टैंडिंग इज कि पेरिफेरी से रिसोर्सेज आते हैं, and then the core do the value addition in the goods, and they sends back these goods to the semi periphery and periphery area, and in return they get much higher profit. So that is why this is the relationship which exists in the dependency theory. इस relation की वजह से इस system ही ऐसा बन गया जिससे गरीब ममालिक गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं और अमीर ममालिक अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। That is the paradox and that is the irony which is being explained and highlighted in the dependency theory, जिसको हमने डिस्कस किया।
So dear viewers, this was dependency theory in very nutshell और बहुत briefly explain किया. मैं कुछ learning materials भी add कर दूंगा link में for you to do further studies. और thank you very much. अगर आपको कोई भी सवाल हो, you can write them in the comment section and I'll make sure to answer them. Good luck and thank you.